Okay, can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो अपना कैमरा ऑन करो जल्दी से। गुड, सभी कैमरा ऑन करो। कितने आज कमी है? 5-6। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हमने लास्ट टाइम किया था Gaussian curvature is intrinsic. So let's move ahead and talk about Manardi-Kodazzi equations, which is actually part of the Gauss characteristic equation. If we just use the characteristic equation and the what we call Weingarten equation, उन दोनों को combine करके एक relation हमें मिलेगी, दो actually, जिनको हम कहते हैं, which are actually very fundamental to the surfaces. So let me go straight to what do I mean. Manardi-Kodazzi equations. Let's इसको बदलते हैं. Manardi-Kodazzi equations. ये दो है, तो that's what we are going to prove. That is, these two equations are LV minus M sub U is equal to small m L minus L minus mu times M minus lambda times N. इसी तरह से M sub V minus N sub U is equal to NL minus M minus nu times M minus mu times N. And of course यहाँ पे जो यहाँ लिख लेते हैं, where L, M, N are the second order fundamental magnitudes. Magnitude that we find in the second fundamental form. During the second fundamental form, L du square plus twice M du dv plus M dv square. This is also second fundamental form, and you know that then L is actually equal to R sub u dot this N, इसी तरह से M और N and N is equal to RVV dot N, where N is the surface normal, unit normal, and ये जो lambda, mu, nu और L, M, N है, they are Christoffel symbols that appear in our Gauss equations. They're easy to prove, rather. Proof, and we show that this is indeed true. Now this is L sub V, and we're differentiating partially with respect to V here and here with respect to U. Now proof इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Now we consider this identity because our surface is smooth, so mixed partial derivatives are equal. Consider the identity. ये है R sub UU, then differentiated with respect to V, should be the same as RUV, then differentiated with respect to U, because it's just changing the order of partial differentiation. And since our surface is smooth,
यहाँ लिख सकते हैं where of course ये जो R है it's our surface. Since it is smooth by our assumption, then these two must be equal. Mixed partial derivatives must be equal. Now from Gauss formulas, हम जो हमने किए थे formally, R11 was L times this unit normal vector n plus small l times R sub u plus lambda times R sub v. Now, यहाँ मैंने R u को substitute किया and I'm partially differentiating it with respect to v. Similarly, R u v was equal to from Gauss formula mn plus small m times R sub u plus mu times R sub v. And of course, it is partially differentiated with respect to. Now, what you do, you just differentiate both sides and see what you get. So when you differentiate both sides, you will get. Now on the left hand side, you are differentiating it with respect to v. So you just apply the sum and product rule of differentiation. So you will get LVN plus L small lv R sub u plus lambda sub v R sub v. Then plus, of course, then I would have L NV plus L, then I had RU, now it is RUV plus lambda, of course, RVV. Now this should be the same as M sub U, right hand side को मैं U के साथ differentiate किया N plus small m sub U, it's a scalar, M sub U, फिर से मैंने लिखा M sub U, R sub U, then plus mu sub U, RV, plus of course then M N sub U plus M R sub U plus what would be the last one? It would be mu R U V. Yeah, R V U H because my mixed partial derivative are equal. Okay, now let's call this equation 1. Now if we again substitute from Gauss equations, हमारे जो Gauss formula है वो क्या है? In terms of Christopher symbols, जो हमने इससे पहले किया था कि R U U जो है वो बराबर होता है R U U is L N plus small l R sub U plus lambda R sub V. Similarly, R sub UV was M times N plus small m times RU plus mu times R sub V. And the third one is R sub VV is equal to N plus, of course, small n R sub U plus mu R sub V. Now these are all Gauss formulae. अब देखो यहाँ पे RUU है इसी तरह से RUV है RVV है तो यहाँ इन चारों पे अगर हमें सब्स्टिट्यूट करें तो सब्स्टिट्यूटिंग अगेन हम करेंगे नहीं लेकिन अगर हम करें तो वो लंबा चौड़ा इक्वेशन होगी लेकिन हम बिना करे भी जो हमें करना है मतलब जो हमें इसमें से इवैल्यूएट करना है वो कर सकते हैं substituting again the values of R sub UU and R sub UV, R sub VV from Gauss formula अगर हम फिर से ये करें and n sub u, इसमें n sub u भी है n sub v भी है n sub u and n sub v from Weingarten equations जो के हैं Weingarten equations का मतलब n sub u is equal to fn minus gl divided by h square into r sub u
plus FL minus EL H square RB and N sub V is equal to Fn minus Gm divided by H square R sub U plus Fm minus En divided by H square RB. अच्छा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जब हम ये सारा कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे you will get everything in terms of N, in terms of three vectors N R sub U R sub V. जब मैं N मतलब N तो है ही R U यहाँ पे है ओके अब N V को मैं अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँ you will get it in terms of R U and R V. इसी तरह से आर वी वी को जब मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट करूंगा आर यू वी को जब मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूंगा वो बोथ साइड्स वुड बी इन टर्म्स ऑफ एन आर यू एंड आर वी दैट मींस because it forms a basis on R3. Once I have the same basis on the both sides, I write both sides in terms of the same basis, then I can equate the coefficients. Then the coefficients of each of these vectors, say n, r, u, r, v, on both sides should be the same because they form the basis of R3. जो कि हम इससे पहले भी यूज कर चुके हैं. अच्छा अगर once I do the substitution, अगर मैं सोचूं, and now if I equate the coefficients of n and equate the coefficients of n, now if we equate, and then if we equate the coefficients of n vector, the normal vector, coefficients of n on both sides, let's see. देखो एन यू एन वी को तो तुम्हें छोड़ ही सकते हो ना जब मुझे एन के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है. वो क्यों? क्योंकि आर यू आर वी है, एन इसमें है ही नहीं इन दो में. तो मान लो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थोड़ी देर के लिए जो हमें चाहिए. तो एन यू एन वी एग्जिस्ट नहीं करता. ओके और ऑफ कोर्स ये मान लो इसकी हमें जरूरत ही नहीं बिकॉज वी आर ओनली फोकस्ड ऑन एन. ओके सो आई हैव गॉट एम एन यू, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता. अब जरा पकड़ते हैं. एक तो है इसके साथ एल बी लेफ्ट हैंड साइड पे, गुड डन. फिर आर यू आर वी जरूरत ही नहीं है. अब आर यू वी में एन के साथ क्या है? आर यू वी में एन के साथ है एल, है ना. एन का कोएफिशिएंट एल आएगा. सो एक तो आएगा इसका मतलब स्मॉल एल और कैपिटल एल आएगा, है ना. एल आर यू वी नहीं एम है इनके साथ, सॉरी आर यू वी है ना. सो आर वी वी के साथ है एल, सो मतलब एक तो ये टर्म आएगी. फिर आर ये क्या है यहाँ पे यू वी और यहाँ पे है फिर आई थिंक व्हाट इज इट शुड बी देखना पड़ेगा ये क्या लिखा. इज इट वी वी और यू यू? आई डिफरेंशिएट. हाँ इट इज यू वी. तो ये क्या है? यू वी है. इट इज वी यू राइट. इट वाज विद रिस्पेक्ट टू यू. अच्छा यहाँ पे पहले आर यू था विद रिस्पेक्ट, ये आर वी वी होना चाहिए राइट. और वी वी के साथ जो एन के साथ कोएफिशिएंट है वो है एन. मेरे कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं जिनका एन आएगा, इन इसका तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ आर यू एंड आर वी है यहाँ पे. तो बचा कौन सा? एन के लिए एक ये टर्म आएगी, एक ये टर्म आएगी, एक ये टर्म आएगी. अब देखो आर यू वी को सब्स्टिट्यूट करूं तो एन के साथ है एम, और आर वी वी को सब्स्टिट्यूट करूं तो एन के साथ है एन. सो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिलना चाहिए एल वी और क्या आएगा एन के साथ प्लस स्मॉल एल टाइम्स एम राइट. देन आई हैव ऑफ कोर्स आर वी वी के साथ है एन और अपना तो लैम्डा है प्लस लैम्डा एन should be equal to राइट हैंड साइड में देखो m के साथ m sub u है. ओके देन आई हैव ऑफ कोर्स ये तो आर यू है, ये आर वी है, एन यू के साथ आर यू आर वी है. फिर बचा ये आर यू के साथ है एल, सो इट शुड बी प्लस एम एल, और आर यू वी के साथ है एन, सो इट शुड बी प्लस म्यू टाइम्स आर यू वी, तो एन के साथ है एम, म्यू टाइम्स एन. हो गया अपना. तो वंस आई हैव रिटन इट, जो मुझे पहली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करनी थी वो ये है. तो इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ
LV माइनस MU को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, बाकी इसको यहाँ ले जाएंगे और इन दो टर्म्स को यहाँ पे ले जाएंगे. So I will get this. So it implies that LV minus M sub U is equal to ML minus L minus mu times M minus lambda M. So yeah, which is the first of the equations, first of the Menard-Codas equations. और दूसरी इक्वेशन भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, जो मैं तुम पे छोड़ूंगा, लेकिन एग्जाम में ये करनी है. What we do again, दूसरी इक्वेशन के लिए फ्रॉम द आइडेंटिटी एक ऐसी हम आइडेंटिटी करेंगे, R sub UV differentiated with respect to V को मैं लिखूंगा R VV differentiated with respect to U. So because mixed partial derivatives are equal, so I've changed the order. They should be the same. Now what you do, you again apply the Gauss formula, substituting values of R sub UV and R sub VV from Gauss formula, और उसके बाद इसी तरह से and N sub U, N sub V from Weingarten equation जो हमने किया था, बिल्कुल वही फॉलो करना है. And equating the coefficients of N on both sides. वो प्रोसेस तुम करोगे जो मैंने लिखा था, तो तुम्हें मिलेगी दूसरी इक्वेशन. बट ये जो मैंने लास्ट पे लिखा, यू आर गोइंग टू डू इट योरसेल्फ. उतना जैसे हमने वहां किया था बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी है. तुम्हें दूसरी कोडाजी इक्वेशन मिलेगी. ओके, देन ये तो हो गया अपना जो कुछ फंडामेंटल इक्वेशंस या फंडामेंटल थ्योरम्स अबाउट सरफेसेस है, अबाउट द कर्वेचर, गॉसियन कर्वेचर. देयर इज आल्सो अ फंडामेंटल एक्जिस्टेंस थ्योरम फॉर सरफेसेस, लेकिन हमारे सिलेबस में राइटली सो हमें खाली इसका स्टेटमेंट करना है, हमें वो प्रूफ इसका नहीं करना. फंडामेंटल एक्जिस्टेंस थ्योरम ऑन या फॉर सरफेसेस. तो तुमने कर्व्स के लिए फंडामेंटल थ्योरम तो किया ही है इन चैप्टर 1 आई थिंक. तो वो क्या कहता है, वो कहता है गिवन एनी two continuous functions k and tau such that, जो तुमने किया ही होगा, so given any k tau satisfying the Serif-Rennet equation, the differential equations, giving any two functions of s, arc length ले लो या t ले लो, लेकिन arc length is better. So if you have got curvature and torsion as any two functions, then they uniquely determine, provided they satisfy those equations, what we have is that k t dash, अगर ऐसा triplet of vectors है, so that t dash is equal to kn, n dash is equal to tau p minus kt, and b dash is equal to minus tau n. अगर ये तीन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होती है with the triplet of vectors t and b, then there exists a unique curve up to rigid motion in R3, which has got k, curvature k and torsion tau. And of course t and b are the Rennet frame at each of the points. In a given two functions and satisfying certain differential equations, it uniquely determines, almost uniquely determines, a curve in R3. Same is fundamental existence theorem for surfaces, something similar. But हमें जैसे कि हमारे syllabus में इसका proof नहीं है, तो but we can just state it and maybe discuss it a little. So, okay. When
ऐसे लिखते हैं if the coefficients EFG and LMN of the quadratic differential forms first, let me call it E du square plus twice F du dv plus g dv square, and the second one is L du square plus twice m du dv plus n dv square are such that अगर EFG ऐसे हैं, which are coefficients of these two differential forms are such that first is positive definite, and it's a positive definite quadratic form, which means it will be greater than or equal to 0. It will be 0 if and only if both du and dv is equal to 0, which is positive definite. And the six coefficients satisfy the fundamental equations. Coefficients satisfy the Gauss equation, the Menard-Gudazi equation, the Menard-Gudazi equations, and the equations of Gauss. अगर ऐसा है कि ये नंबर्स या ये फंक्शंस गाउस की जो इक्वेशंस है और मेनार्डी-गुडाजी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये पॉजिटिव डेफिनेट है, then there exists a surface uniquely determined. Then there exists a surface uniquely determined to within a Euclidean displacement, within a rigid motion, to within, जैसा कि curves के लिए भी fundamental theorem में ही है, within the Euclidean displacement, for which first and second, मतलब ऐसी curve के लिए ये जो दो हैं हमारी forms, they are the first and second fundamental form. The first and second fundamental forms. So this is our fundamental existence theorem. So this is जिसको हमें खाली state करना था, it is something similar. यानी वहाँ पे हमें 3 sets of differential equations है. यहाँ पे basically है equations of Gauss and Menardi equations. They are also differential equations, but they are partial differential equations. है ना, जैसे ये है, what is this? This is a partial differential. जैसे ये है, this is a Menardi-Gudazi equation. It's partial differential. You are partially differentiating with respect to v and with respect to u, and it must be equal to this thing. Oh, so similarly, the second one. And Gauss equations are also partial differential equations. So we are saying that certain partial differential equations are satisfied by EFG and LMN, then there exists a corresponding surface which is unique up to a Euclidean displacement. And if there is any difference, that will be only in the placement in the ambient space. Look, you can superimpose one surface with other by a Euclidean motion, by a rigid motion. Anyway, so let's leave it there and we come to another topic that is what is a geodesic on the surface. Now there are many. We've put a surface. Now this is a surface patch. You can also draw it. We also have something like this. A torus. So there can be many curves on it. Huh? So there is a special type of curves on the surface that we call geodesic. And of course, on the plane, they correspond to straight lines. But on a surface, of course, if you have a surface like this, you know,
So it's the motion of this, what we call the shortest distance between 2 points on the surface. It need not be a straight line or on a sphere or any general surface. So but to define it mathematically, so what do we mean is this definition. A curve alpha on a surface S is called geodesic if या तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव यानी अल्फा डबल डॉट का मतलब है d स्क्वायर अल्फा बाय dt स्क्वायर, या तो ये जीरो हो और it is perpendicular to the surface at the point alpha t. यानी अगर हर पॉइंट पे एक वैसी है कि हर पॉइंट पे जो इसका कर्वेचर वेक्टर है अल्फा डबल डॉट, इट इज परपेंडिकुलर टू द अल्फा टी, दैट इज मैं कह सकता हूँ इट इज पैरेलल टू द यूनिट नॉर्म. For all values of parameter t. मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो या तो इसका डबल डेरिवेटिव जीरो हो या इट इज परपेंडिकुलर टू अल्फा डॉट. नो अल्फा मैं कह रहा था अल्फा डबल is perpendicular to the surface. It is perpendicular to the surface at each point of the curve. Yani, how do I write it? It is perpendicular to the surface. What does that mean? It lies along the end, the unit surface normal. Yani, in other words, if the curvature vector of the curve, this is the curvature vector, है ना? तुम्हें पता है अगर हम unit speed reparameterize करते हैं तो मतलब अगर हम curvature is actually defined as alpha double dash, या अगर हम दो बार differentiate करें with respect to the arc length, so तो इसको हम कहते हैं इसका curvature vector, because how velocity changes would determine the curvature of the motion of a particle. That's obvious. अगर इस velocity change होती है तो कितनी होती है ना, किस direction में होती है. Velocity change का मतलब you are moving along a straight line, है ना? तो ये हो सकता है ना कि आपका जो velocity vector कैसे change होता है वही तो बताएगा ना कि आप कितना मुड़े कितना घूमे. अगर वो इसी direction में रहेगा तो then it will be a straight line, but if it changes its direction, then you would have a curve. You would have a curvature of your moving path. So if the curvature vector of this curve on the surface lies along the surface normal and is parallel to the surface normal, then we call it a geodesic. And of course, on a plane that can happen only if it's a straight line. क्योंकि तभी ये इसका जो curvature vector है that would be zero, and तो पहली वाली condition apply हो. तो यहाँ पे surface normal का उतना connection नहीं, because zero is perpendicular to everything, so there is no issue. Okay, so that was a definition. Now further we can just look at a curve and resolve its curvature vector into two parts. So by that I mean, let me write down this. Now let alpha t, which is r at ut vt, be a curve and be a unit speed curve, just to make things a little easier. Unit speed curve on a surface R
R is equal to R at U. Okay. Now, then alpha dot t जो है is a unit vector. क्योंकि मैंने कहा unit speed curve, it's a vector of magnitude 1 and is by definition, it is by definition tangent to the curve. So it must lie in the tangent plane to the surface at that point. It's by definition tangent to alpha, tangent vector of alpha at t. Hence, alpha t, alpha dot जो है, is perpendicular to the surface normal because it lies in the tangent plane. Perpendicular to the surface normal capital N. Okay, of the surface R at UV. So if I take this triplet of vectors alpha dot, then I have N, and then I take their cross product, which would be perpendicular to both N and alpha dot. Okay, are three mutually perpendicular unit vectors. Mutually perpendicular unit vectors. So now I can think of, so let me draw something. So I've got a surface like this, and I've got a curve here, and I have a tangent, that's my alpha dot, which is perpendicular to N, which is the surface normal, right? Because it lies inside the tangent plane, this tangent vector. And then I have a vector which is perpendicular to both. Now you can choose two directions, but suppose just to, so that we can see it, it comes out of our screen. So it is alpha dot cross N. So I've got these three mutually perpendicular unit vectors on a surface. Okay. Again, since alpha is a vector now, alpha dot by our definition is unit speed, यानी इसका magnitude fixed है, constant है. Therefore, alpha double dot जो है, it is perpendicular to alpha dot. Any vector with fixed magnitude is perpendicular to its derivative. So alpha double dot is perpendicular to alpha dot. And now anything that is, because this actually forms the basis, right? So anything that is perpendicular to alpha dot must lie in the plane determined by an alpha and n. No, sorry, it is perpendicular to alpha dot means it must lie in this plane. So it is perpendicular to this vector. So everything that is perpendicular to this vector must lie inside this plane. If you have plane banega na, I don't know, I have been able to make it as how do you extend it? हाँ, इस plane में होना चाहिए. Oh, I wish मैं undo कर रहा हूँ. चलो. Anyway, what I'm trying to say is, मैं फिर से इसको बनाऊँ. ठीक से. I've got a curve and I've got a tangent to that curve. जिसका मैंने alpha नाम दिया. So alpha is a curve here. Alpha dot is here. So then I have got, because it lies inside the tangent plane, it n must be perpendicular to it, and this is my alpha dot cross to n. So this is three mutually perpendicular unit vectors. So अगर मैं इस plane को देखूं, which is spanned by n and alpha double dot, sorry, alpha dot cross n. And since this alpha double dot is perpendicular to alpha dot, it must lie inside this plane. So hence alpha double dot must be a linear combination of n and
मैं यहाँ इसको लिखूंगा just n cross, just to be consistent. हाँ भी मैंने लिखा है n cross double dot, यहाँ मैंने लिखा alpha dot, so it is basically n cross alpha dot. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता basically, वो इसका नेगेटिव होता है तो मुझे उस डायरेक्शन में वो होगा. Anyway, I have to choose a direction, so I choose n cross alpha dot n and n cross alpha dot. तो उसका मतलब alpha double dot जो होगा, it would be some number, let's call it k sub n times n plus k sub g times n cross alpha dot. This is what I have. Now kn is called the normal curvature. It's called the normal curvature. We resolve this curvature vector of the curve into two parts. Its component along n and its component along n cross alpha dot for a given curve. So kn is called the normal curvature. ये जो ये number है इसको normal curvature कहते हैं, simply because अगर मैं alpha dot n लेता हूँ, so this would be just kn, which is our normal, which is the definition of the curvature of the normal section or the normal curvature of the curve. Okay. So kn is called the normal curvature, and kg is called the geodesic curvature of alpha, and k sub g is called the geodesic curvature of alpha, respectively, which curve has surface. So that means kn, जैसा कि मैंने अभी लिखा, take dot product of with n, so it will be alpha double dot n, और kg जो है वो है of course alpha double dot n cross alpha dot, and of course ये जो alpha double dot square है, it can be easily checked, it is just kn square. Double dot मतलब norm का square means खुद के साथ dot product, so it would be kn square plus kg square, because these are just usually perpendicular vectors. Okay, so but चूंकि हमारी speed जो है, so we know that k जो है curvature of the curve जो है, in general curvature of the curve, k is equal to alpha double dot, because we've got a unit space curve, so therefore I can say k square, the curvature of the curve hai, that is equal to kn square, the normal curvature, plus the geodesic curvature square. So this is how we resolve the curvature of the curve on a surface. So we take its component along the normal direction, and of course along the alpha dot cross n, n cross alpha dot. So what is now geodesic? So geodesic कहता ये है कि उसका जो ये alpha double dot n है, यानी they are parallel vectors, right? So इसका मतलब, so let me write it down. Should I write it? kg must be 0 for a geodesic. So that's important. अगर मैं इसको देखूं तो k मतलब what do we say, या तो alpha double dot 0 है for a geodesic, और alpha double dot जो है that is parallel